prepare onto the arrays, linked list, strings, arrays and linked list very well. So जो सबसे ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में नहीं, फाइनल इंटरव्यू में पूछा जाएगा, वो यूजुअली लिंक लिस्ट होता है, एरेज होता है, 2D एरेज होता है. दैट इज समथिंग आस्क ऑफन, दैट इज समथिंग दैट इज आस्क ऑफन, यू विल सी दैट. तो आगे ट्रीज भी है, ग्राफ भी है, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे भी, बट इंटरव्यू ट्रीज और ग्राफ तक कभी नहीं पहुंचता है, ट्रीज और ग्राफ तक कभी नहीं पहुंचता है. सो योर मेजोरिटी ऑफ इंटरव्यू जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो दिए जाते हैं कि यू प्लीज सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, या तो मेजोरिटी ऑफ टाइम वो एरे के प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं, लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं, यस इन फ्यू केसेस स्टैक और क्यू के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं, इन फ्यू केसेस स्टैक और क्यू के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं. बचे हुए इसमें देर आर, यू डू नॉट फाइंड दैट देर लाइक अ मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर आस्क्ड as far as the final interviews are concerned. And not only for you, even I have seen that experience category, people are still working like that. क्योंकि इंटरव्यू में बची हुई चीजें पूछने का वैसे कोई मतलब नहीं होता. सो इंटरव्यूअर वांट टू चेक whether your thinking ability is there in place or not. Can you think? Can you build the code? So he is not interested whether you are good at linked list, whether you are good at trees or graph. He is not really interested. Data structure का इंटरव्यू सिर्फ बंदे की थॉट प्रोसेस और कोडिंग एबिलिटी चेक करने के लिए होता है. सो हर एक इंटरव्यू के पीछे पर्पज होता है. एनीवे, लेट अस गो अहेड. सो शुड वी मूव ऑन टू द स्टैक एंड क्यूज. लिंक लिस्ट को हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं एंड देन वी आर गोना स्टैक एंड क्यूज. आई गेस मैंने आपको बताया था हम लोग 4 घंटे में लिंक लिस्ट खत्म करेंगे, लेकिन 4 घंटे में नहीं खत्म किया एक्चुअली. इफ यू रिकॉल व्हाट इज दैट, one day, like Thursday, last 2.5 hours, we were talking about linked list. Then Friday, whole lecture we talk about linked list. Saturday, Sunday, you people have worked hard to understand linked list. I'm hoping so. And then probably today, again, my more than half of the lecture, apart from the people who met me in the morning, I guess we have again talked about linked list. I guess this is more than enough discussion onto the linked list. एंड अगेन इतना टाइम स्पेंड करने का रीजन ये नहीं है, आइडियली लिंक लिस्ट आपके कोर्स का प्री रिक्विजिट है, तो आइडियली आई शुड हैव फिनिश इट विद इन 2 आवर्स. इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. इवन आपका जो डे वाइज ब्रेकअप है उसमें भी उतना ही बताया गया है कि आई शुड नॉट कंज्यूम मोर देन वन सेशन, एंड वन सेशन मींस ओनली 2 आवर्स. आई शुड नॉट कंज्यूम मोर देन 2 आवर्स onto the linked list. But if I just go through, or if I just quickly revise this linked list is there, you may not be able to clear your final interviews. And considering that, and since we know that with experience कि हर बार इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एंड देन स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट. सो हर बैच हम लोग पढ़ाते हैं, आप कोई स्पेशल नहीं हो. सो वी आर टीचिंग इन द सेम वे, एंड देन पीपल आर फाइंडिंग ओके ये इंटरव्यू में आएगा, नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट. नाउ इट्स टाइम we go ahead and talk about what is stack and queue, and we'll continue further. So what is stack and queue? The very first thing and very important word that I want to make it over here, I'm saying that stack and queue are utility data structures. Stack and queue are the utility data structures. What do my utility data structures? आप लोग बात कर रहे हो एरे की, एरे का यूज किसके लिए होता है? एरे का यूज किसके लिए होता है? फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करने के लिए होता है. सर लिंक लिस्ट का यूज कैसे किसके लिए होता है? आपके नंबर डायनेमिकली लिंक लिस्ट ग्रो हो सकता है, डायनेमिकली लिंक लिस्ट श्रिंक हो सकता है, तो उसके लिए अगेन टू स्टोर द नंबर्स, स्टोर द एलिमेंट्स, हम लोग उसको यूज करते हैं. दैट इज ओके, वेरिएबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू कैन स्टोर इनटू द लिंक लिस्ट. आगे जाके हम लोग ट्री पढ़ेंगे. जब हम लोग ट्री पढ़ेंगे तो ट्री के अंदर भी हम लोग कुछ नोड्स लेफ्ट में डालेंगे, कुछ राइट में डालेंगे, कुछ लेफ्ट में डालेंगे, कुछ राइट में डालेंगे. यस अगेन, बट अगेन वी आर ट्राइंग टू स्टोर द एलिमेंट सो दैट वी कैन सर्च इन अ बेटर मैनर. ट्री का यूजुअली मेन यूज होता है कि आप लोग सर्चिंग थोड़ा फास्ट हो जाता है. बाद में आगे जाके हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे. तो ग्राफ में अगेन यू से दैट यू कीप द डेटा इनटू द वर्टाइसेस, एंड देन द वर्टाइसेस कनेक्टेड विद द एजेस. अल्टीमेटली whether you talk about array, whether you talk about linked list, whether you talk about tree, whether you talk about graph, whether you talk about even a hash table, these are the data structures used to store the data. They are used to store the data. However, when I'm going into like a queue or stack, these are bit different. These are a bit variant. And what they're saying
They're the utility data structures. So what do you mean by utility data structure? I'm saying that they are not usually used for storing the elements. वो स्टोरेज नहीं है, लाइक योर लिंक लिस्ट, एरे और ट्री और ग्राफ, ये स्टोरेज नहीं है। ये क्या है बेसिकली? ये स्टोरेज नहीं है, ये आपका स्टैक और ये आपका क्यू, ये प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। इट इज नॉट यूज फॉर स्टोरिंग एलिमेंट। सर मैंने एम्प्लॉइज लिए और एम्प्लॉइज में स्टैक में रखे, इससे आपका पागलपन नजर आता है कि एम्प्लॉय ये स्टैक में क्यों स्टोर कर रहे हो भाई? एक क्या एम्प्लॉय को एक दूसरे के सर के ऊपर बिठाना है क्या? इट डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस। आई इट इज नॉट अ स्टोरेज, इट इज नॉट फॉर स्टोरेज, इट इज फॉर प्रोसेसिंग। हाँ, अगर आपको कुछ तो प्रोसेसिंग करना है उस एम्प्लॉय का, जहां पर आपको लास्ट इन फर्स्ट आउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, तो टेम्पररीली यू आर यूजिंग इट इन अ स्टैक। या फिर जहां पर आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, यू आर टेम्पररीली यू आर यूजिंग क्यू। So you always use it for the temporary storage. You do not use it, you do not use it for what is that? Temporary storage during during processing. During processing, इसके लिए उसका यूज होता है। प्लीज अंडरस्टैंड। Yes, you can say that it is like a waiting room. Yes, you can say like that. You go ahead. It can be implemented either using array or using a linked list. That is the reason we have learned linked list earlier. तो हम लोग इसको array से भी बना सकते हैं, linked list से भी बना सकते हैं। And but then how do I consider? As I already told you, जब हमने array पढ़ना चालू किया था, हमने पढ़ा था array as an ADT। जब हम लोग लिंक लिस्ट पढ़ रहे थे, लिंक लिस्ट एज एन एडीटी। एडीटी abstract data type, the primary functions. So irrespective of its representation, I'm looking for the ADT operation. तो अगर मैं कहता हूँ स्टैक एज एन एडीटी, तो स्टैक के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होने चाहिए? स्टैक के अंदर प्राइमरीली देयर आर 4 ऑपरेशंस। वन ऑपरेशन इज द पुश, like a pop, and the peak, and the is empty. What is the behavior that you're looking for? The behavior that you're looking for is a last in first out. The behavior that you're looking for is a last in first out, and the primary 4 operations are there as a stack ADT में: push, pop, peak and is empty. पुश, पॉप, पिक एंड इज एम्प्टी। सर वो स्टैक क्या होता है? हमने कभी देखा नहीं है। आपने कभी देखा नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा, शायद आपको पता नहीं है। लेट्स से दैट आपके बुक्स है, आपके घर में बहुत सारे बुक्स हैं, एंड यू हैव केप्ट द बुक्स वन ऑन द टॉप ऑफ अदर। यू हैव केप्ट द बुक्स वन ऑन द टॉप ऑफ अदर। अगर आपके घर में आपको कई बार दिख रहे हैं, तो जाके देखो इतने बुक्स है कि नहीं, मुझको पता नहीं आपके घर में, बट इफ यू हैव केप्ट द बुक्स वन ऑन द टॉप ऑफ अदर, इसको हम लोग कहते हैं स्टैक ऑफ बुक्स। इसको हम लोग कहते हैं स्टैक ऑफ बुक्स। अगर वो नहीं देखा होगा, कभी घर में प्लेट्स है, लेट्स से आपके घर में प्लेट्स है, यू हैव गॉट प्लेट्स kept one on the top of other. When the plates are kept one on the top of other, I can again say that it is a stack of plates. Stack of plates. Good thing is that अगर मुझको इस प्लेट के ऊपर, अगर मुझको इस प्लेट के ऊपर, इस स्टैक के ऊपर अगर कोई और एक एक्स्ट्रा प्लेट रखना है, क्या करना पड़ेगा? कॉमन सेंस है, अगर मुझको कोई एक प्लेट रखना है, आई नीड टू ऑलवेज कीप इट ऑन द टॉप। आई नीड टू ऑलवेज कीप इट ऑन द टॉप। अगर आपके घर में ऑलरेडी अगर यहाँ पर ऐसे 50 प्लेट रखे हुए हैं, अगर ऑलरेडी 50 प्लेट रखे हुए हैं, तो 50 प्लेट में आप लोग ऐसे थोड़ी करते हो, सो वो 50 प्लेट्स है तो मैं उसमें से बीच में से डाके इंसर्ट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग प्लेट यू जस्ट कीप इट ऑन द टॉप ऑफ इट। यस पूजा, व्हाट एवर यू आर सेइंग इज आल्सो करेक्ट। इवन डीवीडी स्टोरेज, अगर डीवीडी का बॉक्स अगर आपके पास है, तो डीवीडी के बॉक्स में भी वी आर कीपिंग अ डीवीडीज वन ऑन द टॉप ऑफ अदर, वन ऑन द टॉप ऑफ अदर, वन ऑन द टॉप ऑफ अदर। सो जब भी आपको कोई नया वाला ऐड करना है, यू ऑलवेज ऐड इट ऑन द टॉप। और अगर आपको कुछ रिमूव करना है, लेट्स से अगर आपको चौथा वाला रिमूव करना है, चौथा वाला रिमूव करना है, बीच में से रिमूवल ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको चौथा वाला रिमूव करना है, तो ऊपर के 3 आप लोग बाहर निकाल लो, फिर आप लोग चौथा वाला रिमूव करो, बचे हुए 3 वापस से आप लोग अंदर रखो। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी हैव गॉट लाइक अ पुश मैकेनिज्म वेयर यू कैन ऑलवेज पुश इट ऑन द टॉप। We have got like a pop mechanism where we can always pop from the top, and we have like a pick mechanism where we can pick pick in the sense pick, English word pick, check what is there onto the top. So हम लोग सिर्फ ये देख सकते हैं कि टॉप के ऊपर क्या है या नहीं है। एंड फाइनली वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड इज एम्प्टी टू चेक whether the stack is empty or not. मैं फिर से बता रहा हूं, आपके घर में ऐसी कोई भी चीज हो जिसको आप लोगों ने वन ऑन द टॉप ऑफ अदर आप लोगों ने रखा हुआ है, सो यू से दैट इट इज अ स्टैक ऑफ एलिमेंट्स, एंड द प्रोसेसिंग इज वेरी सिंपल। आइदर यू कैन पुश ऑन द टॉप और यू कैन पॉप फ्रॉम द टॉप। तो जो कुछ भी, जब हम लोग पुश ऑन द टॉप ऑन द टॉप ऑन द टॉप ऑन द टॉप कर रहे हैं, तो जो कुछ भी तो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वही पहले बाहर निकल सकता है। दैट इज अ कॉमन सेंस।
दैट्स इट। तो सर व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? यूजुअली यूजुअली ये जो आपके पुश पॉप पिक ये जो सारे ऑपरेशंस हैं, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजुअली कम्स आउट टू बी O ऑफ 1। मैंने कहा यूजुअली कहा क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन, बट अगेन द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन इफ यू टॉक अबाउट, देन इट शुड बी O ऑफ 1। अगर आपको गंदे तरीके से लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, लिखने वाले को रोक 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 कौन सकता है ना? सो यू कैन ऑलवेज राइट द स्टूपिड कोड, नो डाउट ऑन दैट। You can always write the stupid code, no doubt on that, but ideally you should implement it so that the time complexity is O of 1. Okay, I understand that. So things are done. I'm continuing further. I'm continuing further. This is all about stack. This is all about stack. What about queue? So queue में क्या होता है? A queue is also something similar, but queue we are saying this is a kind of first in first out data structure. A queue is kind of first in first out data structure, and I'm very sure since you are in India, I'm very sure यहाँ पर इस क्लास में सारे लोग इंडिया के ही हैं. So if you are in India, then you must have seen queues very commonly, isn't it? So queues are very common in India. आप लोग कहीं पर भी जाओ, so there are always queues is there. So later movie ticket line वहां पर queue है, ATM line वहां पर queue है, आप लोग ट्रेन रिजर्वेशन के लिए जाओ वहां पर queue है. So you go on like any counter, you go to any counter and you find that on any counter there is a set of people are there, and now the person who comes in first should be served over here. That person goes out, and then obviously the next person who is there, he can be served, and again he leaves that. और जिस ऑर्डर में लोग क्यू में ऐड होते हैं उसी ऑर्डर में लोग आइडियली सर्व होते हैं, assuming that इस क्यू में कोई करप्शन नहीं है या लोग चीटिंग नहीं कर रहे, so this goes is like a first in first out order, right? Anyway, I'm just going a step ahead. What I'm saying is that so simple queue is like a first in first out. By the way, queue के operation कौन-कौन से हैं? Similar operation. You can push the element into the queue. Many times people also refer it as a NQ. NQ मतलब enter in the queue. Enter in the queue. और से pop operation को people also call it DQ, the delete from the queue. Delete from the queue. So कुछ books में इसके लिए NQ और DQ वर्ड यूज किए, मैं पुश और पॉप ही वर्ड यूज कर रहा हूँ. चॉइस इज yours. आपको अगर कुछ अच्छा वर्ड आपको लगता है, यू कैन इवन फॉलो दैट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. यू अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट. कंसेप्चुअली पुश का मतलब है आप लोग एलिमेंट को क्यू के अंदर ऐड कर रहे हो, और पॉप का मतलब है आप उसको क्यू में से डिलीट कर रहे हो. पिक मीन्स, व्हाट इज पिक ओवर हियर? पिक ओवर हियर यू वांट टू सी द एलिमेंट टू बी डिलीटेड. सो पिक का हमेशा मतलब ये होता है जो नेक्स्ट एलिमेंट आप लोग सर्व करने वाले हो, जो आप लोग इमीडिएटली नेक्स्ट सर्व करने वाले हो, I just want to take a look at that. So it's a pick element. Okay, you also have a function like is empty to check whether the queue is empty or not. Whether the queue is empty or not. So I'm saying that there are operations on a stack and there are also operations on a queue. So basically stack as a ADT क्या है, queue as a ADT क्या है, ये मैंने आपको बताया. But sir इसका implementation कैसे होगा? Just now I said that. Now when it comes down to the implementation, when it comes down to the coding, I say this is using array and this is using linked list. This can be implemented using array or it can be implemented using linked list. Both ways it is available. तो सर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? सर वी आर एक्सपर्ट ऑफ लिंक लिस्ट. कैन यू प्लीज टेल अस हाउ वी कैन इंप्लीमेंट इन लिंक लिस्ट? Yes, take a look at this. How you can implement linked list? I simply say that you can consider a stack using linked list, and over there you write it only 2 3 functions. A function like add first, function like del first, you write a function like is empty. शायद हमने तीनों फंक्शन ऑलरेडी लिखे हुए हैं. A add first function you can call it like a push function. Del first function you will call it like a pop function, and is empty function is nothing but already हम लोगों ने is empty एक बार लिखा था, so it is the same function I'm talking about. But so what about peak function? Oh, peak function, that peak function can be also very simple to implement. All I need to do is that जो भी मेरा पहला वाला डेटा होगा, head dot data, जो first element का जो डेटा होगा, that I can return, and my 4 functions are ready. So how it is working? Just visualize. एड फर्स्ट और डेल फर्स्ट हम लोग उसकी बात कर रहे हैं. सो दिस इज अ लिंक लिस्ट. इट इज लाइक अ हेड पॉइंटर. इनिशियली हेड इज इक्वल टू नल. लेट मी ऐड द एलिमेंट इन ऑर्डर 10 20 30 40. Let me add the element in order 10 20 30 40. So if you are all following in order 10 20 30 40, let us begin with, let us first add the 10.
A10 add first, मैं add first का कोड नहीं बता रहा हूँ, add first अभी ऑलरेडी आपको आता है. So you said 20. When you add 20 before 10, I guess now head is pointing to this. 30 in add first manner, 30 in add first manner, I guess the head will be pointing to this. And again you are adding, let's say 40 is added before that, again in add first manner. By the way, जब मैं delete करूंगा delphus से, तो पहला कौन सा delete होगा? Delphus से अगर मैं delete करूंगा with the Delphus mechanism, if I am deleting it, which one will get deleted first? Common sense is that the 40 is deleted first, and obviously head is going to the next node. If 40 is deleted first and then head is going to the next node, is it? Yes, it is absolutely simple. तो जो आपने सबसे end में add किया था वो सबसे पहले delete हो गया. प्लीज नोट, जो सबसे पहले ऐड किया था वो सबसे पहले डिलीट हो गया. अगर मैंने और एक बार डिलीट किया, अब क्या डिलीट होगा? डेल्फस फैशन. अगर मैंने और एक बार डिलीट किया तो क्या डिलीट होगा? आई एम सेइंग दैट यू कैन डिलीट 30, so 30 will get deleted, and obviously head is going to the next node, and then you again continue, the 20 can be deleted and then it will go to the next node. All right, and then you again continue, you delete 10 and again you can go to the next node. That is what all you can do. Finally you find that the list is empty there. So this structure, I'm saying that it is last in first out structure. This is last in यदि structure जो सबसे पहले अंदर आया था वो सबसे पहले बाहर गया. वैसे आप लोग चाहो तो इसको उल्टा भी कह सकते हो. You might say that it's the first in is last out. So don't you think that हमने शुरुआत कैसे की थी? 10, 18, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. When you take out 40 first, 30 later, उसके नीचे 20 and 10. So जो 10 आपने सबसे पहले अंडर किया था वो सबसे बाद में बाहर आ रहा है. So आप इसको या तो लास्ट इन फर्स्ट आउट कहो या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट कहो. बोथ आर वन एंड द सेम. Am I correct? A last in first out and first in last out, these are the synonymous words. So जो सबसे एंड में अंदर गया था वो सबसे पहले बाहर आ रहा है, या फिर उल्टा हम लोग बात कर रहे हैं, जो सबसे पहले अंदर गया था वो सबसे एंड में बाहर आ रहा है. इट इज अ नॉर्मल सिंपल एप्टीट्यूड कि इट इज एग्जैक्टली बोथ आर सिनोनिमस. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ए बाय द वे, सो द इंप्लीमेंटेशन इज वेरी सिंपल. यस, मैं वही कह रहा हूं कि जो एग्जिस्टिंग कोड आपके पास है कॉपी पेस्ट करो. आपके पास एडफस का कोड है, आपके पास डेल्फस का कोड है, आपके पास इज एम्प्टी का कोड है. करेक्ट. ये कोड कॉपी पेस्ट करो और उनके नाम सिर्फ रीनेम कर दो. डोंट कॉल इट, don't call it as adfus and delphus. Start calling it as a push pop is empty and you are done with that. सिर्फ पिक का फंक्शन नया लिखना पड़ेगा. वो कैसे लिखना है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. इट इज एब्सोल्युटली डन. बाय द वे, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस? चलो पुश का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ फटाफट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पुश, यस, एडफस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of 1 है. दैट इज गुड. डेल्फस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, Delphus का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, yes, it is O of 1 है. That is good. And then what is that? Next one is empty का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. It is still, हम लोग सिर्फ head is equal to null है या नहीं उतना ही चेक कर रहे हैं. It is O of 1. और pick का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, it is hardly again one line of code, head dot head tar return करना है. It is again O of 1. Nothing extra I need to do with this. Oh, that is fantastic. That is fantastic. That is all. You can do the stack using linked list. I hope आप लोग ये implement कर लोगे. That is your lab assignment. दैट इज योर लाइव असाइनमेंट. आप लोग करके देखना. ओके, करने करके देखना है मतलब करना क्या मैंने आपको ऑलरेडी बताया. आपको सिर्फ वहां से कॉपी पेस्ट करना है, नए से मत लिखना. डोंट वेस्ट योर टाइम. लेट अस कंटिन्यू फर्दर. सो हाउ वी कैन इंप्लीमेंट द क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट? अगेन नाउ लिसन. जब हम लोग स्टैक में काम करते हैं, जब हम लोग स्टैक में काम करते हैं, व्हाट आई सेड, वी आर पुटिंग द एलिमेंट्स one on the top of others. So my first plate, second plate, third plate, fourth plate, fifth plate. So we are always trying to add the element onto the top. While removing, we are always removing an element from the top. Oh, I understand that. Every time you are adding an element onto the top, and every time you are removing an element from the top. Now what's the meaning of this? The operations are done from the same end. Operations are done from the same end. आप लोग जरा थोड़ा सा, and that is the reason, since operations are done from the same end, operations done from same end, and that is the reason जब हम लोगों ने लिंक लिस्ट बनाया था तो लिंक लिस्ट में हम लोगों ने क्या किया था? डेल फर्स्ट
एंड ऐड फर्स्ट, तो हम लोग हेड के ऊपर ही ऐड फर्स्ट कर रहे थे और हेड के ऊपर ही हम लोग डेल फर्स्ट कर रहे थे, सो दैट इट शुड वर्क फ्रॉम द सेम एंड। बट यू गो टू द क्यू, जरा थोड़ा सा क्यू में देखो, क्यू में यूजुअली कैसे होता है, यूजुअली मतलब क्यू में ऐसे होता है, यूजुअली और नॉन यूजुअली बताने की जरूरत नहीं है। इन क्यू द एलिमेंट जो बाहर आता है, आई गेस इट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस, बट जब एलिमेंट ऐड होता है इट इज गेटिंग एडेड फ्रॉम द एंड। Am I correct? So whenever the element is added, it is always added at the end. Element is always added at the end, and when it is removed, it is always removed from the start. So what is the meaning of this? They are working in two different ends. They are working in two different ends. So ये वाला end we call it the rear end. This वाला end we call it the front end. सो फ्रंट एंड, जान लो नाम क्या दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां पर आपको ये समझ में आ रहा है कि एडिशन एंड डिलीशन they are happening on two different ends, two different ends. And as you understand that, you see the operations, you can say del last for this and you can say del first for this. So हम लोग एक में end में add कर रहे हैं और del first कर रहे हैं, that what we can do. And we can also have kind of is empty operation if you need. Yes, you can also have even a peak operation, that is possible, पिक ऑपरेशन दैट इज पॉसिबल। ये जो एडलास है इसको आप लोग पुश कह सकते हो या इसको आप लोग एनक्यू ऑपरेशन कह सकते हो। डेल फर्स्ट है, इसको आप लोग पॉप कह सकते हो या इसको आप लोग डीक्यू ऑपरेशन कह सकते हो। इज एम्प्टी जो है वो तो वैसे भी इज एम्प्टी जो आप लोगों ने इससे पहले लिखा था, दैट शुड गो एज इट इज, नो चेंज। एंड पिक ऑपरेशन दैट विल स्टिल, ए पिक मतलब क्या, जो आपको अगला डिलीट करना है, ये अगला डिलीट करना है मतलब कहां से हम लोग डिलीट कर रहे हैं, डेल फर्स्ट से डिलीट कर रहे हैं। तो जो डेल फर्स्ट से डिलीट कर रहे हैं, सो मतलब पहला नोड डिलीट होने वाला है, like a head of this head data. Yes, absolutely correct Jaydeep. So this will go in a similar way. एक बात बताओ, एक बात बताओ, what would be the time complexity? So I'm saying that I am following a singly list, listen carefully, the singly list with head pointer, singly linked list with head pointer. What should be the time complexity? One by one. Atlas का time complexity, एटलस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यस यू नो दैट इट इज ओ ऑफ एन। ये आपको पहले ट्रैवर्स करना पड़ता है और बाद में ऐड करना पड़ता है। डेल्फस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डेल्फस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ वन, ओके दैट इज गुड। इज एम्प्टी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इज एम्प्टी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट इज अगेन ओ ऑफ वन, सिर्फ हेड इज इक्वल टू नल तो चेक करना है। एंड पिक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यस दैट इज आल्सो वन। व्हाट इज प्रॉब्लमेटिक ओवर हियर, इसमें से गड़बड़ वाला कौन सा है, गड़बड़ वाला कौन सा है इसमें? I guess at last or your push function, I would say that this part is inefficient. I'm not saying that it is wrong. ए प्लीज नोट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, मैं कह रहा हूँ ये अनएफिशिएंट है। ये गलत नहीं है, ये अनएफिशिएंट है, क्योंकि आइडियली आइडियली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होना चाहिए, ओ ऑफ वन होना चाहिए। रुको जरा पहले अमित के क्वेश्चन का आंसर दे दूं। अमित, वी आर राइटिंग ओनली वन लाइन ऑफ कोड इन अ पिक, one line of code, there is no loop required. If there's only one line of code, the time required is always constant, no? And if the time required is always constant, then it is O of one. What the point? जब लूप होता है तो शायद O of n होता है, यहाँ पर कोई लूप है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बाय द वे, तो सर ये अनएफिशिएंट जो है, इसको एफिशिएंट करने के बारे में आपको सोच रहे हो, मैं तो सोच रहा हूं, तो चलो सोचते हैं इसको एफिशिएंट कैसे किया जाए, how I can make it efficient. Oh, go ahead, why don't you try a singly linked list, go ahead, try another singly linked list, but now this time singly linked list with head pointer and a tail pointer. Don't keep it only head pointer. I'm saying that maintain two pointers, head as well as tail. जहां तक मुझको पता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसका हम लोगों ने कोड भी लिखा हुआ है, सो यू आर वेल अवेयर ऑफ इट। और जब हम लोग ये करते हैं तो बोलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एट लास्ट, नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एट लास्ट, yes it is O of 1. Time complexity of del first, yes it is still O of 1. Is empty, yes it is O of 1, and this is also O of 1. So you'll find that this is the common implementation. I repeat once again, this implementation is not wrong. ये wrong नहीं है, but it is inefficient है। So wrong और right कैसे पता चलता है? See, as long as you are doing first in first out, as long as
you are following first in first out, the behavior is first in first out, it is always a queue. अगर वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो वो क्यों है, एफिशिएंट है या अनएफिशिएंट है वो अलग बात है, वो एफिशिएंट है या अनएफिशिएंट है वो अलग बात है, बट वो क्यों है, दैट इज फॉर टेक, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर। अब जैसे आप लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हो, ये सिनोनिमस है लास्ट इन लास्ट आउट। अगर पहला इन, अगर पहला आउट होता है तो जो लास्ट इन था वो लास्ट आउट हो जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? So I have seen that, few people start saying that, sir, this is a wrong implementation, this is a wrong implementation, and this is correct implementation. I said that it is not wrong or this is not right. I'll say that both are correct implementation. This is inefficient and this is more efficient. That is the only thing. मुझको एक जोक याद आया, वो हम लोग बचपन में सुनते थे। तो जोक वॉज वेरी सिंपल एंड आप लोगों ने सुना होगा एंड यू ट्राई टू, यू कैन को रिलेट विद दिस। द जोक इज वेरी सिंपल। वैसे कुछ स्कूल में टीचर है, टीचर वो बच्चे से पूछ रहे हैं कि मेरे पास 10 आम है, 10 में से 5 आम खराब हो गए, 5 आम अगर खराब हो गए तो कितने आम बचे? तो बच्चा कहता है 10 आम बचे। फिर वो टीचर पूछ रहा है, वो 10 में से 5 खराब हो गए तो वो 5 आम कैसे बचे? इज सेइंग दैट खराब भी हुए तो भी वो आम ही है ना, जो खराब हो जाता है वो थोड़ी ना जैक फ्रूट बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, you got my point. The point that I want to make it is that, so वो खराब भी हुए तो भी आम ही है, तो ये अच्छी वाली क्यों है, ये शायद बुरी वाली क्यों है, लेकिन ये क्यों तो है। अब ये मत कहना सर ये क्यों ही नहीं है, क्यों तो है, इट इज अनएफिशिएंट बट इट इज स्टिल अ क्यों। हाँ, प्लीज अप्रिशिएट दैट, दिस इज द ओनली पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इट। सो एज लॉन्ग एज द बिहेवियर इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, as long as behavior is first in first out, it is always a queue. As long as behavior is last in first out, it is always a stack. Implementation करना वो आपकी मर्जी है, and that is the reason we were using a word ADT, abstract data type. That is the reason we were using a word ADT, abstract data type. So internal representation may change from programmer to programmer, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में चेंज फ्रॉम द लैंग्वेज टू लैंग्वेज, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन टू द बिहेवियर एंड देन यस एट द सेकेंड लेवल यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द एफिशिएंसी। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा पता है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज क्यू, हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज क्यू, हाउ टू implement stack using linked list, how to implement queue using linked list, and then these are your lab assignment for the lab. I'm not going to show that. If you at all need, नहीं सर करके दिखाओ, let me know tomorrow if at all। मैं करके दिखाओ मतलब मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करूंगा, मैं फ्रॉम स्क्रैच तो लिखने वाला हूं नहीं। हाँ, राजेंद्र का कुछ क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी आंसर इफ एमसीक्यू आस्क फॉर एट लास्ट? MCQ asks for at last, and if nothing is mentioned, you should consider like a normal linked list. I hope Rajendra you got the point. राजेंद्र का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में अगर पूछा गया कि लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट के लिए एटलास का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिंगली लिंक लिस्ट बोला गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा मेंशन नहीं किया गया है, देन यू कंसीडर योर ट्रेडिशनल लिंक लिस्ट, एंड ट्रेडिशनल लिंक लिस्ट यू से दैट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n। हाउएवर अगर एक्सप्लिसिटली पूछा गया है कि देयर इज अ लिंक लिस्ट विद हेड एंड टेल पॉइंटर, if it is written कि linked list with head and tail pointer, then you can say that the time complexity is kind of O of 1। तो जब कुछ नहीं पूछा गया है then you should always go with the traditional implementations। by the way अभी मैं थक गया बोल बोल के। now it's time we will go ahead and we will talk about how do we write a stack using array। Sarang is asking how add first is push। Sarang, I didn't get your question। what I'm saying is that I guess I was trying to explain over here। सिंपली आई एम सेइंग दैट अगर आपको स्टैक में कुछ भी ऐड करना है, यू वांट टू ऐड एलिमेंट, यू शुड ऑलवेज ऐड द एलिमेंट ऑन द टॉप, ऑन द टॉप। सो जो कुछ भी आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है, ये जो कुछ भी आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसके ऊपर अपने एलिमेंट ऐड करना चाहिए। जो भी आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसके ऊपर एलिमेंट ऐड करना चाहिए। जब भी आपको डिलीट करना है यू शुड ऑलवेज रिमूव इट फ्रॉम द टॉप। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू शुड बी डूइंग, अगर आप लोग ऑपरेशन कर रहे हो एडिशन एंड डिलीशन फ्रॉम द सेम एंड, अगर आप लोग ऑपरेशन कर रहे हो एडिशन एंड डिलीशन फ्रॉम द सेम एंड, इट इज गिविंग मी द बिहेवियर ऑफ
last in first out, and if it is giving me the behavior of a last in first out, I call it as a stack. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, as long as operations are done from the same end. तो सर अब अगर आपका क्वेश्चन ये है सर वो फर्स्ट ही क्यों, लास्ट क्यों नहीं, चॉइस इज योर्स. अगर आप लोग कह रहे हो कि नहीं सर आई विल राइट एड लास्ट एंड डेल लास्ट, if I follow add last and del last, will it also give me the last in first out behavior? Can someone try it? Let's say अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि I will follow last sorry क्या चल रहा है, add last and del last. अगर मैं कह रहा हूं add last and del last, so let's say add last 10, add last 20, add last 30, add last 40, and I again say del last. ए डेल लास्ट मतलब जो लास्ट अंदर आया था मैंने इसको लास्ट को ही बाहर कर दिया, तो सर ये भी तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है. इज इट लास्ट इन फर्स्ट आउट? Guys, this is also last in first out. See, as long as you are doing addition and deletion from the same end, इसी end से आप लोग ऐड कर रहे हो, इसी end से आप लोग डिलीट कर रहे हो, ये भी स्टैक ही है, ये भी स्टैक ही है. लेकिन प्रॉब्लम इज दैट व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? Time complexity of add last, you know that time complexity of add last is O of n. Time complexity of del last is also O of n. And since the time complexity of add last and del last is O of n, I'm saying that it is not efficient. This is last in first out, but this is not efficient. So Sarang, I'm coming back to your question. Why you are saying that कि add first ही push क्यों है? I'm saying that add first ले लो या add last ले लो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. What is important for me is that you do the operations from the same end. ये भी फर्स्ट करो और वो भी फर्स्ट करो, या फिर ये भी लास्ट करो और वो भी लास्ट करो, उसमें से जो भी एफिशिएंट है आई हैव चोजन दैट. Is this what you want to ask, or you have any other question? You are welcome. Okay. Now if this is clear, we can go ahead. Hey, by the way, अब जो मैंने स्टैक के बारे में बताया, that is equally applicable for Q as well. ये Q के लिए भी applicable है. ये Q के लिए भी applicable है, मतलब यहाँ पर मैंने यहाँ पर add last और del first किया है क्योंकि मुझको दो opposite डायरेक्शन में काम करना था. एक को लास्ट में करना था, एक को फर्स्ट में करना था. किसी को अगर उल्टा करना है, नहीं नहीं सर मेरे को एड फर्स्ट करना है और डेल लास्ट करना है, दैट इज वैलिड. आई वुड से दैट यस, दैट इज आल्सो वैलिड. एड फर्स्ट करना है, डेल लास्ट करना है, दैट इज आल्सो वैलिड. बट ओनली थिंग आई एम सेइंग दैट एफिशिएंसी की थोड़ी बहुत वाट लग जाएगी, यू नीड टू हैंडल दैट इन दैट केस. ओके, I guess now it is enough of discussion, and then I should somewhere jump on implementing a stack. How we can